JDU gone. RLD gone. TMC to go it alone in West Bengal. AAP to go it alone in Punjab. NC to go it alone in Jammu and Kashmir. Now, SP-Congress Alliance in Uttar Pradesh on the brink. Seat-sharing talks break down between Congress and Samajwadi Party. Congress insists all well. Mr. Akhilesh Yadav has said, leads me to the belief that he is not as committed to the India alliance as we are. He has said that the seat-sharing formula should be completed. I agree. Samajwadi Party looks disillusioned. कई दौर में बातचीत हो चुकी है, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी. India now in alliance only on paper. Losing firepower before the big fight. India now just an idea. Top focus 7:30 p.m. on Tudipondi this evening. So is the Samajwadi Party-Congress Alliance on the brink where the state of Uttar Pradesh is concerned? Let's take that question to our panelists this evening. Joining me is Anila Singh, National Spokesperson, UP BJP, Surendra Rajput, National Spokesperson, Congress, Ghanshyam Tiwari, Spokesperson, Samajwadi Party, Amitabh Tiwari, Political Analyst. Surendra Rajput ji, पहले एनसी ने मना कर दिया कि अलायंस नहीं होगा, टीएमसी बंगाल में नहीं कर रही है अलायंस, आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं कर रही है. अब सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कर रही है. देखिए प्रीति, तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट है. पहली चीज तो मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के बारे में जो आप कह रहे हैं, ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं. हमारे पास तो बल्कि इससे उलट सूचना है कि अलायंस किसी भी मूवमेंट फाइनल हो सकता है. आज केसी वेणुगोपाल जी ने भी कहा, अभी डिम्पल यादव जी ने भी कहा है, अभी लेटेस्ट वो कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी. तो हमारे पास तो ये बहुत पुख्ता जानकारी है. हाँ, एक चीज जरूर है कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग, मैं पहले से कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पर्टिकुलर चैनल्स की मैं जरूर बात करूंगा कि ये सब लोग मिल करके एक इस तरीके की अफवाह और हवा बनाने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राहुल गांधी जी की क्या नाम है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ये लोग परेशान हो गए. वो कहते हैं ना कि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं. शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, 80-80 लाख लोग नौकरियों के लिए फॉर्म भर रहे हैं और उनके भी परीक्षाएं लीक होती जा रही है. हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये लोग विषयांतर की बात कर रहे हैं. तो जब सुरेंद्र राजपूत जी, घनश्याम तिवारी जी से भी पूछ लेते हैं, बट बात तो ये है, अफवाह की जगह छोड़ क्यों रहे हैं? 2 महीने से कम है चुनाव, 10 दिन में अनाउंस हो जाएंगे, आपका सीट शेयरिंग ही नहीं बैठ पा रही है. मैं सहमत हूँ इस बात से मैं सहमत हूँ. थोड़ी डिले हो रही है, इसमें वार्ता चल रही है, क्योंकि हम लोगों के दल अलग अलग हैं, हम लोगों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एक है भारतीय जनता पार्टी को हटाने की. तो निश्चित तौर पर कुछ तो परेशानियां हैं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं. लेकिन फहमीदा रियाज ने एक जगह पे कहा था प्रीति कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रहजन है इतने, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. हम तो जनता के साथ अलायंस में चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ बात चल रही है और हम बहुत होपफुल है कि जल्दी से जल्दी आपको. बट सुरेंद्र राजपूत जी, लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपने कविता कोट की, जरा कांग्रेस को भी सुना दीजिएगा, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, सीट शेयरिंग नहीं होगी. पर आई जस्ट वांट टू कट अक्रॉस टू घनश्याम तिवारी इनटू दिस कन्वर्सेशन. घनश्याम तिवारी, बिफोर आई गो टू अनिला सिंह, आई वांट टू गेट यू इन. व्हाट्स हैपनिंग? Because at least at one end you have the Congress which says everything is on board, the seat sharing alliance talks are going on queue, but where it really comes down, the message coming from the Samajwadi party is you've had enough, like the TMC, like the Aam Aadmi Party in Punjab, and you want to go it alone, or the NC.
Good evening, Preeti, to you, my fellow co-panelists and the viewers. There are three things that are important at this juncture. One is that there is a clear fluidity, which is inexplicable on the part of Congress. And that fluidity is visible with respect to alliance discussions. That fluidity is visible also in the constant barrage of rumors that get floated every day, probably on the behest of BJP, that various Congress leaders at the top are leaving and joining BJP. So this fluidity definitely is one reason why the alliance talks have not progressed in a concrete manner right at the backdrop of elections that are important for the country. And the contrast between BJP and India alliance cannot be bigger. That's point one. Point two is that, yes, every day people are expecting India alliance to get the act together and communicate the agenda that the India alliance will stand for. And unless the seat sharing is finalized, that agenda cannot be communicated. As far as Uttar Pradesh is concerned, Samajwadi Party under Akhilesh Yadav ji has been very clear that our agenda is the PDA. Our agenda is this continuous barrage of leakages that BJP is subjecting the youth and stealing away, just but like they stole away the election. Are you a part of this alliance with Congress? Are you frustrated? Are you waiting? What's going on? We are neither frustrated, we are nor waiting. We came together as an architect of this alliance. We see the fluidity on the Congress party, but we are not waiting. Our organization is mobilized at the ground level. At every stage, we are mobilizing the youth who are facing a stealing of their future by BJP. I want to bring in Anila Singh, but before that, Surendra Rajput ji तो साफ कह रहे हैं कि ये इंतजार नहीं कर रहे अब. इन्होंने 2 राउंड्स ऑफ सीट तो पहले ही अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, उनमें से एक चंदौली जहां से आपकी यात्रा निकली थी. तो अगर आप अब खड़े नहीं उतर रहे हैं सीट शेयरिंग पे, ये इंतजार नहीं कर रहे अब, ये कह रहे हैं. इन्होंने 2 राउंड नहीं किए प्रीति, 3 राउंड किए. ऐसा नहीं है कि इन्होंने 2 राउंड किए. अभी एक सूची और आई है, बट वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है. हम आपसे फिर से बता दें, हम लोग तो साथ मिलकर के 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन सारी सीटों पर ये लोग अपने कैंडिडेट अभी दे रहे हैं. जो मुझे पता चला है, जो सीटें अलायंस में कांग्रेस को देनी है उसमें से किसी पर इन्होंने बात नहीं किया, किसी पर कैंडिडेट नहीं दिया, ऐसी मेरी सूचना है. मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं है. हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अलायंस जल्दी से जल्दी सीटों के नाम जल्दी से जल्दी तय हो जाने चाहिए और ये मेरे ख्याल से कुछ घंटों की बात है, ये तय हो जाएगा. और चलिए, कुछ घंटों की बात है. अनिला सिंह जी, you come from Uttar Pradesh. The charge right now at your doorstep is it is your party which is trying to float these rumors and trying to create a rift within an alliance which already is troubled. My Ram to all. And do you think that Bharatiya Janata Party is mouthpiece of Akhilesh Yadav ji और ममता जी और अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी और फारूक अब्दुल्ला जी? So what they are trying to portray here, that Bharatiya Janata Party is behind the tiff they are having in today's date. But one thing we have observed, that wherever Mr. Rahul Gandhi ji is going, that when that state, that political party is leaving this alliance. And if I talk about the leaders of the Congress party or the Samajwadi party, even they are leaving their political parties. Leaders from Congress party, they are leaving INC. Akhilesh Yadav ji's many party leaders, they are leaving Samajwadi party. So definitely there is a serious problem in both of the political parties. And if I talk about Uttar Pradesh, people of Uttar Pradesh are mighty happy with Yogi Raj. So whether we talk about the development or we talk about the communal harmony, we see everywhere. So why we require leaders like Rahul Gandhi or Akhilesh Yadav who totally believe in appeasement politics? So Uttar Pradesh doesn't need any sort of appeasement politics. We want development politics and whole lot of respect for faith. I want to bring in Amitabh Tiwari. Okay, but before I bring in Amitabh Tiwari, Anila ji, I want to go back to Ghanshyam Tiwari wants to come in. Ghanshyam Tiwari and Surendra Rajput ji. The point is very clear, which Anila Singh is saying, that they don't need to. BJP doesn't need to float any rumors. You are doing it to yourself. Every week you have one of your own alliance partners comes up and says that they are going it alone or leaving the alliance. Ghanshyam Tiwari. I have a very brief point. The difference between India Alliance, which is an alliance of equal partners, and NDA, which should actually be called NSA, which should stand for Narendra Surrender Alliance, that you have to surrender to Mr. Narendra and then you are part of that alliance, whether you are Nitish Kumar ji, whether you are
RLD, whether you are any other party, whether you are Ajit Pawar or whether you are Mr. Shinde. So the fight is between this Narendra Surrender Alliance and India Alliance that has to be a partnership among equals. And the criticism is fair, and I think the party leaders are watching this criticism. And as a result, I believe the alliance Ghanshyam Tiwari, after a very long time, you've come on my debate completely disillusioned with your own alliance. But I'm not disillusioned. I'm just saying you seem very disillusioned, sir. You've been one of the people who will come and fight it out, but you look very disillusioned with your own alliance. Rajputji, you want to add to it? And I'll just bring in Amitabh Tiwari into this conversation and go back to Anila Singh. Ji. हाँ, बड़ी छोटी छोटी सी 2-3 बातें कह रहा हूँ प्रीति। मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा अनिला जी ने, वो हमारे पीछे रह भी नहीं सकते। वो क्यों बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, भाजपा वाले या कांग्रेस की, क्यों करेंगे? उन्हें तो किसान को बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें बेरोजगार को बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें जो है चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन लोकतंत्र को लूटने से फुर्सत नहीं है। जो आज सुप्रीम, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रुपए इकट्ठे करने से, लूट की छूट से फुर्सत नहीं है। वो हमारे पीछे कहाँ पड़ेंगे? हमारे पीछे तो उन्होंने ईडी, सीडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा रखा है, और उसके जरिए ये लोग जो करेंगे वो आपके सामने। हम एक बात बताते हैं, हम जनता के निर्देश में और जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज की डेट में जो शख्स भी नीतीश कुमार बनेगा, जो शख्स भी जयंत चौधरी बनेगा, वो शख्स को जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर होगा, नाव पर नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब आपके पीछे तो आपके ही पड़े हैं ना, बात तो ये भी है। अनिला सिंह, प्लीज कम इन फॉर अ rebuttal and I'll bring in Amitabh Tiwari for a larger context on what it will look like if Samajwadi Party and Congress go it alone in UP. Anila, you wanted to come in, ma'am. Go ahead. Yeah, absolutely. सुरेंद्र जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी, सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के रजीम में नहीं, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि सीबीआई क्या है, पिंजरे का तोता। अभी तो नहीं कहा ना, सिंस नरेंद्र मोदी जी हैज कम इन पावर, we have not been termed like that. So please do not try to insult or humiliate these agencies. They are doing their work. अगर आप लोगों का गिरेबान बिल्कुल, आप लोगों का दामन बिल्कुल साफ है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। You shouldn't be scared of CBI, ED or any of the investigative agencies. आप कुछ गलत करेंगे तभी तो आप डरेंगे ना जी। ये कौन सा तरीका होता है? And secondly, Preeti, as you asked me, if Akhilesh Yadav ji's party and Rahul Gandhi ji's party, if they go solo in Uttar Pradesh, how we are going to benefit? No, ma'am, I'm asking Amitabh Tiwari ji, but you're free to answer. Go ahead, ma'am. Even if they come together, then also Bharatiya Janata Party and our allied partners, NDA family, is going to benefit, because we know it very well. UP is one state which is going to vote for NDA family to Bharatiya Janata Party. We have double engine ki sarkar, Modi and Yogi. All right. I want to bring in Amitabh Tiwari right now into this conversation. Amitabh Tiwari, for a man of numbers and an astute political analyst, to break it down of what the political landscape UP looks like. If the Samajwadi Party and the Congress Alliance doesn't work out, what does it look for the India Alliance, which clearly is on paper if this doesn't work out? See, in 2014, all the parties in UP contested independently. Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Congress and the BJP-led alliance. So then it reverts back largely to the 2014 scene when the NDA won 74, the Samajwadi Party 5 and the Congress, I think, won 2 seats or 1 seat at that point of time. However, the context is also different in the sense that there was no Ram Mandir inauguration at that point of time. And the opposition, or at that point of time, the party in power, was not that disarrayed compared to what it is currently. Because as you said, India bloc is now reduced to the UPA era, because there were additionally 5 states where India bloc would have made a difference: West Bengal, Punjab, Delhi, UP, and Maharashtra and Bihar. But in most of the states now that the alliance has fallen off, and now all these individual parties cater to different blocks, like the Samajwadi Party largely to the MY and lower OBCs. The Congress does not have a lot of vote share left, and the BSP largely to the Jatovs or the Dalits. The BJP or the NDA bloc has the largest social coalition in UP in terms of the upper caste,
the non-Yadav OBCs and the non-Jatavs, which comprise largely of 55 to 65% of the population. So it's a very strong alliance. And the Samajwadi Party has offered a good deal to the Congress Party in terms of 17 seats with a 6.4% vote share in 2019 and only 2 seats in 2022 Vidhan Sabha elections. However, the problem is that in the Congress Party, who will decide is the question mark, I think. Whether it is the Congress president will decide, whether because the Gandhis contest from UP, they will decide, or somebody else will decide. So I think they are playing the game of passing the parcel among सुरेंद्र राजपूत, दिक्कत यही है आपकी, जो एक सीट थी पहले 2019 में, एक सीट वाली पार्टी को 17 सीट दे रहा है ये अलायंस, पर डिसीजन नहीं आ पा रहा है. क्या प्रॉब्लम है? कुछ समस्याएं हैं, हम स्वीकार करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं. अमिताभ जी के सामने भी और आपके सामने भी. हमें ईमानदारी से, हम राजनीति में बेवजह की बेईमानी पर भरोसा नहीं रखते. लेकिन हम एक चीज बताते हैं आपसे, बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पर कमिटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें मिलकर के लड़ना है. कौन सी सीट कौन लड़ेगा यह बड़ा इश्यू नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स ओनली. आई कोट यू ऑफिशियली एट दिस मोमेंट कि ये कुछ घंटों की बात है. उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सीट शेयरिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. कुछ जगहों का थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे, कौन कौन से वाली सीट लड़ेगा ये बात जरूर आ रही है. मुरादाबाद उनमें से एक है, पर चलिए जी. नहीं, मैं आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात कह रहा हूँ. हमारे लिए तो सारी की सारी बातें आ रही हैं प्रीति, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कहते ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी. अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे. भाई आप मुझे बताइए, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, इनके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अपना दल कितनी सीट लड़ेगा, निषाद पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर जी कितनी सीट लड़ेगी. पर अपना दल तो 2 ही लड़ेगी. इनका जो ट्रेडिशनल अलायंस है वो कंटिन्यू होएगा. अनिला जी कितनी सीट लड़ेंगे ये बताएंगे आपको. मैं आपसे जी हमारे यहाँ पे आज की डेट में. अच्छा चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, अनिला जी को बोलने दीजिएगा. अनिला जी बोलिए. सुरेंद्र जी, हमारे एनडीए परिवार अभी नहीं बना. ये जो इंडिया अलायंस बना है, ये नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए बनाया गया था ना. ये एनडीए को हराने के लिए बनाया गया था. आप लोगों का तो यूपीए था, और अब हम समाजवादी पार्टी का सुनते हैं पीडीए. तो कोई यूपीए कोई पीडीए आप लोगों ने मिलकर बनाया इंडिया अलायंस की. हम नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, पर हराएंगे कहाँ. Okay, I want to end the show. I want to bring in Ghanshyam Tiwari ji for 20 seconds. Ghanshyam Tiwari, the question is of what Surendra Rajput said. Officially he's saying ये कुछ घंटे की बात है. Do you believe कि कुछ घंटे में सीट शेयरिंग हो जाएगी या आपको विश्वास नहीं है? Well, I think if he's quoting official sources, he's probably more informed on this. But the reality is that if BJP is so strong that it doesn't care about firing on farmers through drones, it doesn't care about paper leaks when 60 lakh, 70 lakh students are writing an exam, then that sense of okay, you know, but today let's go back to what the all right, today let's get back to what the debate is, and that is that will there be seat sharing between the Samajwadi Party and the Congress in Uttar Pradesh? Well, in every other state, that alliance seems to have fallen out. The Samajwadi Party and the Congress Alliance is possibly the only one which is standing put where the India Alliance is concerned. But Surendra Rajput tells us it's only a matter of few hours. We'll figure out. Appreciating all our panelists for joining us. Thank you there.